कश्मीर के अल्पाइन लेक्स हों या ऊटी की रेलवे ट्रैक वॉक, आगरा के शीरोज का जज्बा हो या कुन्नूर के एक हॉस्टल की कहानी, द जर्नीज ऑफ अनट्रैवल हैव ऑलवेज बीन टेकिंग यू टू फार अवे कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री, वन स्टोरी एट अ टाइम। लेकिन इस साल की शुरुआत में मैंने एक चीज प्रॉमिस की थी। पिछले एक साल में कुछ 3 या 4 टाइप के क्वेश्चंस हैं जो हमेशा मुझसे पूछे जाते हैं। अभिषेक, आप नेक्स्ट कहां जा रहे हो? आप ये जगहें ढूंढ कैसे लेते हो? ऐसा कैसे है कि हमेशा इतने इंटरेस्टिंग लोग आपको मिल जाते हैं? एंड द मोस्ट कॉमनली आस्क्ड वन इज कि हम कब आपके साथ ट्रैवल कर सकते हैं? तो इसीलिए तो फाइनली देयर इज अ वे फॉर यू टू अनट्रैवल विद मी। और इसके बाद ऐसा रिस्पॉन्स मिला जैसा मैंने भी नहीं सोचा था। So after weeks of going through all the applications and speaking to dozens of people, we finalized our first batch of untravelers। और उसके बाद वो सफर शुरू हुआ जिसका मुझे और आपको दोनों को इंतजार था। So I remember a couple of months back when Abhishek called me to say that he plans to start take the Untravel show to the next level. But I just had one condition for him, and I don't know how many people know this, but the first ever episode that he shot of the Untravel show, even before it was called the Untravel show, was with us at La Villa Bethany. So I told him, जो भी शुभ काम होगा उसकी शुरुआत तो बेथनी से ही होनी है. So if you're going to start this, then it has to be at Bethany. There is no other way. I think that's the best question somebody has ever asked me, because travel to me is therapy. For me, travel means the essence of that place where I am traveling. Travel to me is to get new experiences so that I can understand myself better. So going to places which I've read about, meeting interesting people, interesting stories. Talking to them, understanding the way of life they have. Unraveling of an experience. If anything can, bring a smile on my face, is like a travel. Even if it's a 2-hour long road trip, it'll work wonders for me. So the video pops up and I immediately click on it, and when Abhishek starts talking, of course I'm like all ears. Travel with strangers, complete strangers, जिनके बारे में मैं कुछ नहीं जानता, मैं जिनको जानता ही नहीं कि कौन आने वाला है, उनका क्या बैकग्राउंड है, तो वो एलिमेंट में was something which I was looking forward to. And so yeah, that was a welcome thing. And then for me, I just wanted to know when, where. So that was the moment, like that's the moment I can explain this properly, because that was the moment like, okay, you can travel with Abhishek. Abhishek's way, khatam. वहाँ बंद, फॉर्म खोलो. Awesome. Hi. Building the same thing. So he is एंड जैसा मैंने पहले भी कहा कि आई डोंट इवन प्रॉमिस कि ये ट्रिप ऐसी रहेगी, ये ट्रिप वैसी रहेगी, दिस विल बी अ ट्रिप ऑफ द लाइफ टाइम और ट्रिप ऑफ द सेंचुरी. बट ऑल आई कैन से इज दैट एट द एंड ऑफ दिस ट्रिप you would go with bonds, you would go back with friendships, and I'm sure जगह जैसी भी होगी, that is one element which will be consistent. That definitely I can promise. और typical untravel style में let me end this monologue कि अगर आज आप कोई भी एक destination untravel style में explore करने के लिए तैयार हैं तो चलते हैं. You don't know the people, आप इस लोकेशन पे जा रहे हो,
ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है, बस उसके बीच में क्या होने वाला है वो जो है कुछ नहीं पता। The moment I first saw the group, the enthu was like 99.9%. That exactly told me the trip is going to be awesome. तो जैसे जैसे लोग आते गए मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि वी आर स्ट्रेंजर्स। मे बी अभिषेक इंट्यूशन इज वेरी गुड, आई नो वी जस्ट कनेक्टेड instantly. Yeah, this was the one of those time when you don't hesitate your secrets to come out. 2 years to just tell me I like you. इर्द-गिर्द मंडरा था, मैंने बोला पता नहीं। अबे उस टाइम पे सोचो वो ब्लैक एंड व्हाइट वाली सिचुएशन है, ठीक है, मुझे दिल खड़ ठीक है, तो उस टाइम पे कहाँ यार, हम तो यही सोच जानते थे लड़कियां मना करके निकल जाती है, हमको क्या पता था कि उनकी भी दिन में चलता था। Daddy took me to my birthday and he told me आपकी फ्रेंड है ना, उन्होंने मुझे बोला कि I love you। लोगों की इस एक्साइटमेंट को और बरकरार रखने के लिए आई वॉन्टेड टू शेयर विद देम अ स्वीट पीस ऑफ नॉस्टैल्जिया फ्रॉम द हिल्स. If you have watched the last episode, you would know that Kochua is a symbol of purity of the mountains. It's a chocolate company born right here in the Himalayas by two mountain lovers, Sai and Prachi. In their own words, they are on a mission to create some of the most amazing and innovative chocolates through pure and natural ingredients. और हमारे इस सफर को ये चॉकलेट्स देंगी एक मीठी शुरुआत. The first 2 hours were really amazing. फोन के लिए कहाँ मिलेगा? Which network can I get a SIM card for? Which mobile operator SIM? Oh, work with telcos. WhatsApp था यार, WhatsApp था यार। बहुत इजी है यार, बहुत इजी है। कुछ भी. Where can I find a train? होटल का डायरेक्शन किधर है? होटल किस तरफ है? Direction of the hotel? होटल किस तरफ है? मन करा बोल दूं, मुझे होटल नहीं पता है तो डायरेक्शन कहाँ से पता चलेगा? Destination. अच्छा, मेरे बगल में यहाँ से Walking distance. हाँ Which is वॉकिंग डिस्टेंस क्लोज बाय। यहाँ पर आसपास भी होटल है क्या? Is there a hotel nearby? That's what she was saying. बिल्कुल ऑलमोस्ट जाते आसपास बच गया यार। नहीं है। That was good यार, that was good यार। जो लोगों के साथ जो एक्सपीरियंस था, जो हमारा रास्ता कटा है वो हमें पता नहीं चला. So this was the first wonderful surprise of our trip, Gadwali Thali. I like to explore, and treat my taste buds. तो मेरे लिए तो बहुत ही मतलब सबसे wonderful surprise था वो. So first it's grilled, wash, boiled. It's bought by the thorn and by the gloves. I never expected वो पत्ता जिससे इतनी खुजली होती है उसका इतना that could Delicious taste चीज, so well. That's red rice, grows in scarcity of water, good for your eyesight. Then we have pumpkin raita, the black seed and the crunch which you will feel in your food is jakhia. It's not mustard. So it's more crunchy than our mustard is. तो अब ये नहीं था कि तुम्हारे सामने एक गढ़वाल में वहाँ तुम हो एक थाली रख दी बस खा लो, ये हमारा क्विजीन है लोकल. नहीं, किसी के घर गए हो, मुझे खाना दो और उसने खाना खिला दिया और हमने खाया बैठ के. It was that experience. I think जो गढ़वाली थाली थी उसमें जो different types के जो nutritious food थे, that attracted me a lot. She doesn't eat. She just talks about eating. I'm She doesn't very eat. picky about She food. ate all the food that was on the plate. ठीक है, मैंने काफ़ी ओवर रिसर्च कर रखी थी, बेथनी की फ़ोटोज़ देख रखी थी, ट्रिप एडवाइज़र पे गए हुए थे,
आपका obviously episode देखा ही था, तो there was a lot of information which was there. So when we entered, right, so it was not like कि आप किसी normal hotel में जा रहे हो. Normally I welcome everyone into the library only, but now since we're quite a few, I thought we'll straight go up, we'll sit in the lounge. Awesome. There's more space for everyone to sit. Curated such a beautiful I know. place. Thank you. Like really. This is home. This is home. This is my home and it becomes a home for everybody. Wow. बट जिस तरीके से सुनीता वाज अगेन हेलो, लाइक बहुत दिन बाद आप घर आते हो ना किसी कहीं से जाके, वो वैसा वो फीलिंग आ गई. So much of love you have. And just see the details, man. Yeah. Like what Asian paints की आ रहा है ना कि हर घर कहता है उसमें कौन रहता है. So I want my home to speak of me, not an external interior designer or an artist. It has to talk about me. चलो but guys come sit. अब लैंडोर आए और हनी जिंजर लेमन टी ना हो तो बात नहीं बनेगी. एंड द वन वी गेट एट बेथनीज इज अनडाउटेडली वर्ल्ड फेमस. I was actually waiting for my turn to come. I mean, okay, you can take it. It's okay. Okay, अभी बोलो. You have all the rights to take it. Anyways, अभिषेक के वीडियोस में सब बोलते हैं, lady, let him speak. Anyway, so this road, we call it the upper chakra. It's an infinity. It's in the shape of an 8. Yes. And we are at the intersection. Wow. Wherever you go, you come back right here. You can't get lost. क्या बात है? That's awesome. All roads lead to Bethany. Oh my God. This is too good. No, idea is Amarjeet's. And as a good wife, I have to tell you, all the artwork is done by him. Done by him. Yes. If you see the edges, no? Oh yeah. So this is not normal edges. These are not circulated, See, all edges are different. All dialogues from the movie. Please But, do a Harry Potter theme. I beg of you. Shush. The wrong group of people have a lot of energy. Good. This is all the song. Oh my God. अरे ये तो नहीं गलत है, बहुत गलत. It's amazing. भूला ला. ये मैं बैग वहाँ रख देता हूँ. मैंने इसीलिए कहा था. That's the way to do it. I follow Buddhism. Buddhism gives me peace. So Bethany gave me that peace. At night again, that beautiful cuisine. My version of the Kashmiri food. Yeah. So please help yourself. There is some paneer, this lovely saag. Wow. जैसे हम अपने घर में किसी गेस्ट को ही ट्रीट करते हैं, तो उसी तरीके से सुनीता ने किया कि अरे खाना भी मिल रहा है, तो some dishes she is serving us. Many things were so new to my palate, but everything was so yum, so delicious. We got the chance to meet Amarjeet. Again, आते ही, guys, I am the husband. I was like, oh my god, this is so cool. So okay, the episode that he's talking about, मैं उसके बारे में बाद में बता दूँ, but I'll tell you this. So I was sitting with him, and this lady walks up and she says,
Mr. Bond, my daughter loves your work. We've loved you in Octopussy. Oh my goodness. You know, at that moment you would have wished he had a Walter a license to kill. I love the conversation that I had with them over dinner. I mean, they are people I think I can talk to them for a week and I think they'll still be on with multiple stories. You know, Sunita, the other day I was coming from Delhi and Delhi airport, this lady walked up to him and she said, "Oh, Mr. Dal, sir, you know, we love your books. My daughter is a great fan. Could you please sign for her, Mr. Dal?" So he also signed it as Dal. Oh. So ये बहुत होता है that half the time people have no clue who he is. खाली सुन लिया कि कोई famous Mr. Bond यहाँ रहते हैं, तो they want to go and take pictures and all. It is like we know each other for ages and we've been talking to each other every day, and you know that hospitality you can never buy it with money. Never. So for a person who loves to share stories, first he has to a person who loves to listen to stories. One of the most interesting one was with Victor Banerjee when we first came here. So his house is the first house after the cemetery. And it's been here 46 years. Okay, yeah. कोई neighbor नहीं है ज़्यादा. So I asked him, I said, Victor Babu, I said, you know, 46 years, anytime, any aberration, any spooky this thing, you know, it's a little cold air going down your spine. कुछ हुआ? कहता Amarjit, this is the most ghostless cemetery in the world. कहता everybody is fast asleep. I mean, they're blessed with people who come and share their experiences, and that's why they're rich with life, rich with experiences. I'll tell you ना, जब से हम आए हैं हम ऑ में रह रहे हैं, ठीक है? Even like today's morning, I mean the morning walk पे हम निकले थे, so we were like this, we have to cover this 8. We will see, we'll go slowly and we'll just experience. With that Mumbai hustle in the years, no, there's so much of noise in the brain that for the last 2 days, the silence is, you know, healing somehow. The brain, the heart. लैंडोर मेरे लिए इज ऑल अबाउट द वॉक्स. वही रास्ते, वही हवा, बट हर बार एक नया एहसास. एंड आई फील सो ब्लेस्ड टू मेक पीपल सी दिस साइड ऑफ लैंडोर. हमें बस इतना पता था कि आज हमारी नेचर वॉक है, मतलब बस इतना था, हमें कुछ नहीं पता था और जानना भी नहीं था. When the recovery started, it's been remarkable. We'll show you when we go along. You'll see in the camera traps the kind of wildlife that's coming back. We have practically every wildlife species that is found in the Middle Himalayas is here. They're breeding. So we have babies, bachas, all kinds of stuff going on. Things that have not been seen for a very long time, like bears, have not been seen for 40 years. Bears have come back with cubs. A female with 2 cubs roaming on the very same trail that we named this trail the Leopard Trail just because we used to see so many leopard signs on it. And now when we check our cameras, we have regularly got leopards. अभी मार्च में ब्रीडिंग सीजन शुरू होता है तो सारे बर्ड सिंगिंग करना शुरू कर देते हैं. अच्छा. और वो कॉलिंग होता है एक दूसरे को, तो क्या होता है कि 2 महीने चलता है.
और फिर ब्रीडिंग होगा तो सब अभी कॉल सुनाई दे रहे हैं और अदर सीजन में नहीं सुनाई देता है। अभी उनका सिंगिंग सुनाई देता है ना। कॉल भी 3 टाइप के होते हैं एक बर्ड के, एक अलार्म कॉल होता है, एक सिंगिंग है, एक जस्ट कॉन्टैक्ट पार्टनर है ना। तो वो सब हम बर्ड के बारे में और भी बातें करेंगे कैसे वो हिल पार्टेज, सिंगिंग सुनाई देगा। दिस इज नॉट कॉलिंग राइट, सिंग कर रहा है तो मतलब अच्छा, जैसे sing कर रहा है। मेल फीमेल का होता है ना कि अपना सिंगिंग कर रहा है, like वो रहता है। ये थोड़ा सा अपील और स्लोप ही है ना, स्लोप है हल्का और अपील है। तो थोड़ा थोड़ा गैप बना के चलेंगे यहाँ से, और जहाँ पे भी आपको कुछ सुनाई देता है या बर्ड, वैसे हम ट्राई करेंगे कि हम कम से कम आवाज़ करेंगे। जितना हम कम आवाज़ करेंगे उतनी पॉसिबिलिटी है कुछ दिखने की। बेसिकली बीरू ने बहुत सटल तरीके से बोल दिया है कि ये जो पीछे गपशप चल रही है ना, जो मैं भी कर रहा था इनफैक्ट, वो थोड़ा कम कर लो और अब जगह पे आओ, गपशप कर लो वापस। आए कैप्टन बीरू। So I think Viru was the front, Abhishek was the back. So they were like completely guiding us. भाई ऐसा था कहीं झाड़ से निकल ना जाओ। कुछ पैचेस थे जहाँ ऐसा लगा कि डिफ़िकल्ट होगा, अरे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बट जो हमारे गाइड थे वीरू, वो आउटस्टैंडिंग थे इन दैट सेंस कि वो हमें लीड कर रहे थे। लीड, वो गाइड की तरह ऐसे टीचर नहीं थे, कुछ थे, वो इन रियल सेंस आपके गाइड थे। 3 o'clock पे ऑल आई डू, वैसे मैं पहले ट्रंक को ढूंढूंगा फट से ऐसे बाइनोकुलर, पहले ऐसे गर्दन नहीं लाऊंगा, ऐसे प्लेस करूंगा, फिर उसको ऐसे फॉलो करूंगा, फिर उस ब्रांच को फॉलो करूंगा राइट 3 o'clock तरफ। तो वो ये प्रोसेस जितना हो सके जल्दी करना है, क्योंकि बर्ड तो 2 सेकंड 1 सेकंड का मौका देती है। तो ये आपकी जितनी प्रैक्टिस होगी उतना आप जल्दी करोगे उसे। तो मैं रूट फॉलो नहीं करूँ, जैसे मैं कर रहा हूँ ना, मैं डायरेक्टली एक बार में बर्ड पे आ जाऊँगा। नए टाइम में आपको रूट फॉलो करना पड़ेगा, बट ट्राई टू डू एज सून एज पॉसिबल। We got to see those, the chip was removed from the camera. We got to see the tiger, the leopard cubs. And इसके आगे से कोई मोमेंट होगा तो ये कैप्चर करता है। तो ये 24/7 वर्क करता है अनलेस की बैटरी खत्म हो गया है। तो बैटरी हम इसका 2 हफ्ते में या 3 हफ्ते में रिप्लेस करते हैं। पहली बार यहाँ पे जो लेपर्ड रिकॉर्ड है दैट इज 10th March एंड 3rd, और ये 8:43 पे है ना। तो दिस इज अ बिग मेल। We were standing at the point where the leopard was lying just a couple of days ago. ये लेपर्ड कैट है। तो पैटर्न में फ़र्क है ना, ऐसे हैं इसके लॉन्ग में, और लेपर्ड का इसके देखो ना, मतलब लेपर्ड का वो देखो आप, उसका पंजा बड़ा सा पंजा, बहुत बड़ा है। सो पहले तो जब हमें बताया गया कि यार अभी ये ट्रैक हो गया है, इसके बाद से कहीं और भी जाना है, सो वी ऑल वर लाइक कि यार अभी तो हमने ये ट्रैक किया, अभी कहाँ जाना है? So Karishma, this is going to be your last untravel trip? No, never. It seems like so. No. कौन अब दोबारा नहीं आने वाला है? देवयानी तो नहीं आने वाली है। अनप्रेडिक्टेबल पार्ट में थे कि अच्छा क्या होगा।
suddenly I saw Sunita. I said कि सुनीता यहाँ पर कैसे? मैं कुछ मतलब होता है ना जैसे तुम बहुत टायर हो जाते हो तो तुम इल्यूजन में आ जाते हो. तो I'm so tired that I'm seeing Sunita here. Then I'm kind of shouted like, oh human. This is too good, man. And a very welcoming surprise because always Sunita is probably the most beautiful host. सुबह एक सरप्राइज, अभी एक सरप्राइज, अभी बोल रहा है कि वो बोल रहा है और भी दूर जाना है, सब लोग ऐसे ऐसे करके सामने दिख जाते हैं. लोग रहते लोग ऐसे. मैंने कहा यही मार. We feel you're doing a wonderful. We feel so proud of him. You know, he is from a simple village. पूरा ब्लॉग है इसके ऊपर. मतलब आज तक उस गांव को जाने का रास्ता भी नहीं बना है और गांव का बच्चा देखो कहाँ पहुँचा है. And of course, food is to die for. जब वापस जाने के लिए वजन कम करना है. कितना वजन वापस नहीं लेके जाओ. Untravel show has taken up a form which I don't think even Abhishek realized when he started it. So it's taken a journey of its own now. Because we are taking back so much from this place. I never, trust me, if it would not have been Govinda, if it would not have been for Abhishek, I would have never come here. I'm going back with memories that will be my life savior whenever I'm feeling low. So I am going back with a big piece of Abhishek, the memory that he created. Yeah. I'm going back with being with nature, experience. I'm going back with lots of memories. I'm going back with a yearn to come back. Traveling to a place and experiencing it. It's not about just ticking things off your list. Going to a place as a tourist and a traveler are two different things, and that is what Untravel show has done for people. The best part is वो मुझे बताता नहीं है कि क्या पूछने वाला है. I have to give impromptu answers. आंसर देना है तो मैं सिर्फ खड़ा कर देती हूँ, कैमरा चल रहा है. अब बोलो. यार स्कूल में भी एलोक्यूशन में ऐसा नहीं होता था जितना ये मेरे से कराता है. वाइवा वाली फीलिंग. सरप्राइज वाइवा.